बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक आपने पहली 5 अहादीस देख ली होंगी। तो पहली 5 अहादीस तो कवर हो चुकी हैं, लेकिन अब हमारे पास आखिरी 2 अहादीस रह चुकी हैं, जिनमें से एक हदीस तो छोटी है, हदीस नंबर 6, लेकिन हदीस नंबर 7 काफ़ी बड़ी है। तो सबसे पहले हदीस नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। हमको उबदान ने हदीस बयान की, उन्हें अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, उनको यूनस ने, उन्होंने ज़ोरा से ये हदीस सुनी। दूसरी सनद ये है, दूसरी मतलब के रिवायत ये है, हमसे बशर बिन मोहम्मद ने ये हदीस बयान की, उनसे अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, उनसे यूनस और मोहम्मद दोनों ने ज़ोरा से रिवायत की कि पहली सनद के मुताबिक ज़ोहरा से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला ने, उन्होंने अपने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जो जवाद सखी थे, और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबले में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जोदो करम फरमाते। मतलब रमज़ान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ज़्यादा इबादत और सखी मतलब के चीज़ों को बांटते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान पढ़ते। अर्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जोदो करम फरमाया करते थे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया जा रहा है कि लोगों तक भलाई लाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लोगों करम फरमाते थे। नरेटेड इब्ने अब्बास, Allah the Apostle was the most generous of all the person, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan. When Jibreel met him, Jibreel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's apostle was the most generous person, even more generous than the strong, uncontrollable wind. So this is how our Prophet was behaved in the month of Ramadan, and how he used to spend the month of Ramadan is being told in that hadith. So अब हम हदीस नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। हमको अबूल इमान हुक्म बिन नाफे ने हदीस बयान की, उन्हें इस हदीस की शुएब ने खबर दी, उन्होंने ज़ोरा से ये हदीस सुनी, उन्हें उबैदुल्ला इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अतबा बिन मसूद ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से अबू सुफियान बिन हरब ने यह वाक़या बयान किया कि हरकुल शाह रूम ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुंचे, जहां हरकुल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। हरकुल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मद्दी रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। हरकुल ने हुक्म दिया कि इसको मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसके पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से उस शख्स के हालात पूछता हूँ, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछेंगे। हरकुल जो है वो अबू सुफियान से, अगर ये मुझसे कोई बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझ को जुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में ज़रूर कोई गलत कोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का ख़ानदानी तुम लोगों में से कैसा है। मैंने कहा वो तो बहुत ऊंचे आला नस्ब वाले हैं। कहने लगे इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने इसकी पैरवी की है या गरीब लोगों ने। मैंने कहा कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा उसके ताबेदार रोज़ पड़ोस बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या वो अपने इस दावे नबूवत से पहले कभी इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं, और अब हमारी उससे सुलह एक मुकर्रर मुद्दत तक ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाले हैं। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का हाल क्या हाल होता है। तो ये अबू सुफियान सारा वाक़या बयान कर रहे हैं। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह होती है, कभी वो हमसे जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ
एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके किसी के शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सुलह रहमी का हुक्म देता है। फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दो कि मैंने तुमसे उसका नस्ब पूछा, तुमने कहा कि वो हम में से आली नस्ब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नस्ब ही भेजे जाया करते हैं। ये हरकुल अब अबू सुफियान को बता रहा है कि ये चीज़ें होती है। मैंने तुमसे पूछा कि ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया नहीं। तब मैंने कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी उस बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसको बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स अपने अब्बा व अजदाद की बादशाह और उनका मुल्क हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने से पहले तुमने कभी उसके दरोगोई का इल्ज़ाम लगाया है, यानी नबूवत से पहले क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई झूठ या इस तरह का बात किया? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरोकार होते हैं या कमज़ोर आदमी? तुमने कहा कमज़ोरों ने उसकी इत्तबा की है। तो दरअसल यही लोग पैगंबर के मुतबय्यन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मुरतद भी हो जाता है? तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही होती है कि जिनके दिलों में उसकी मुसरत रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकरी करते हैं? तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ कोई शिरक न ठहराओ और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अन करीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मतलब रूम का बादशाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना खौफज़दा था। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाले हैं, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उससे पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकुल ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगवाया जो आपने वही कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और उसने वो हरकुल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा और उसमें लिखा था अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अब हरकुल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त बयान कर रहा है जो उन्होंने उसकी तरफ भेजा था। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रूम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे और उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो सलामती नसीब होगी। अगर आपके अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रुआया का गुनाह भी आप पर ही होगा। तो ए अहले किताब एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा हो, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को उसका शरीक ना ठहराएं। फिर अगर वो इस अहले किताब से मुंह फेर लें तो मुसलमानों तुम उनसे कह दो कि हम तो एक अल्लाह की इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और हाथ पढ़कर फारग हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया है, उससे रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन करीब गालिब होकर ही रहेंगे। ये रूम का वाक़या अबू सुफियान बयान कर रहे हैं। सल्तनत के तमाम शहरों में ये लोग हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हुए हैं सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकुल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह हुसैन ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकुल ने सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा उसे देखा तो बताया कि खतना किया हुआ है। हरकुल ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो खतना करते हैं
जब हरकुल ने कहा कि वो यही इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं, फिर उसने अपने एक दोस्त को रूमिया खत लिखा, और वो भी इल्म नजूम में हरकुल के तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकुल हिम्स चला गया। अब अभी हम्स से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत आ गया। उसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकुल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं। उसके बाद हरकुल ने रूम के बड़े आदमियों को अपने हिम्स के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो बाहर आया और कहा, ए रूम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यह हदीस काफ़ी बड़ी है, तो इसलिए काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। तो अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर उस नबी की बैत करो और मुसलमान हो जाओ। फिर वो लोग वैशी गिद्धों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, उन्हें बंद पाया, मगर उन्हें आखिर जब हरकुल ने इनकी नफरत देखी, उनके ईमान लाने से मायूस हो गया, तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी उससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी आजमाइश मकसूद थी, सो मैंने देख ली। तब वो सब उसके पास सब उनके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। फिर आखिर हरकुल की आखिरी हालत यही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को साले बिन किस्सा, यूनुस और मोमर ने भी जोहरा से रवायत किया है। तो ये उर्दू में नरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब इंग्लिश में नरेशन की बारी है, तो देखते हैं हम उसको भी कंप्लीट करते हैं। नरेटेड अब्दुल्ला बिन अब्बास Abu Sufyan bin Harb informed me that Heraclius had sent a messenger to him while he had been accompanying a caravan from Quraysh. They were merchants doing the business in Sham. At that time, when Allah's apostle had truce with Abu Sufyan and Quraysh invaders, so Abu Sufyan and his companion went to Heraclius at Jerusalem. Heraclius called him in the court, and he had all the senior women people sitting in front of him. He called for this translator who translating Heraclius' question, said to him, who among us you is closely related to the man who claims to be prophet, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Sufyan replied, I am the nearest relative to him among us the group. Heraclius said, bring him close to me and make his companions stand behind him. Abu Sufyan added, Heraclius told his translator to tell my companion that he wanted to put some questions to me regarding that man, regarding our prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and if these questions, and he set the condition that if these questions were not answered correctly, then they should contradict me. And Abu Sufyan added, by Allah, had I not been afraid of my companion labeling me a liar, I would not have spoken the truth about the prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first question he asked me about him was, what is the family status, his family status among us you? I replied, he belongs to a very good family among us. Heraclius further asked, has anybody among us you ever claimed the same before? Like, have any one of you claimed that he is a prophet? So Abu Sufyan said, no. He said, was anybody among us his ancestors a king? I replied, no. Heraclius asked, do the nobles or the poor follow him? I replied, it is the poor who follow him. He said, are his followers increasing or decreasing day by day? I replied, they are increasing. He then asked, does anybody among us, those who embarrass the religion, become displeased and renounce the religion afterwards? I replied, no. Heraclius said, have you ever accused him of telling lies before his claim? Abu Sufyan, definitely Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam never told any lie. He was Sadiq and Amin. So Abu Sufyan said no. And after that, Heraclius said, does he break his promises? I replied, no, we are at truce with him, but we do not know what he will do in it. I could not find opportunity to say anything against him except that. Heraclius asked, have you ever had a war with him? I replied, yes. Then he said, what was the outcome of the battle? I replied, sometime
he was the victorious. Sometime we. Hercules said, what does he order you to do? So definitely Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered them to speak the truth and behave with everyone, the kith and kin equally, and also pray for Allah, and it tells us to worship Allah and Allah alone, and not to worship anything along with him, and to renounce all that our ancestors had said. He ordered us to pray, to speak the truth, to be chaste, and to keep good relation with our kith and kin. Hercules asked the translator to convey to me the following. I asked about his family, and your reply was that he belonged to a very good family. In fact, all the apostles come from a noble families among us, their respective people. So now the Hercules is talking to Abu Sufyan after all his answers that prophets always come from a noble family. I questioned you whether anybody else among us would claim such a thing. The reply was in the negative. If the answer had been in the affirmative, I would have thought that this man was swallowing the previous man's statement. Then I asked you whether anyone of his ancestors was a king. Your reply was in negative. And if it had been in the affirmative, I would have thought that this man wanted to take back his ancestral kingdom. So Hercules is answering if the answer was yes, and what if the answer was no. So what was he thinking? As in their book there is written about Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I further asked whether he has ever accused of telling lies before he said what he said, that your reply was in the negative. So I wondered how a person who does not tell a lie about others could ever tell a lie about Allah. I then asked you whether the rich people followed him or the poor. You replied that it was the poor who followed him, and in fact all the apostles have been followed by this very class of people. Then I asked you whether his followers were increasing or decreasing day by day. Then the Abu Sufyan answer was their followers are increasing. And in fact, this is the way of truth faith until it is complete in all respects. I further asked you whether there was anybody who, after embracing this religion, became displeased and discarded this religion. Your reply was in negative. And in fact, this is a true faith when it relies into the heart and mixes with them completely. I asked you whether he had ever betrayed you. Replied in the negative, and likewise the apostles never betrayed. So Hercules is proving that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the real prophet. Then I asked you and what he orders you to do. You replied that he ordered you to worship Allah and Allah alone, and not to worship anything along with him, and forbade you to worship idols, and ordered you to pray, to speak the truth, and to be the case. Just if what you have said is true, he will very soon occupy the place underneath my feet, and I knew it, and he was going to appear, but I did not knew that he would be from you, and if I could reach him definitely. So Hercules is now saying that I knew that the prophet was coming, and I did not knew that it was coming from among you. I would go immediately to meet him, and if I were with him, I would certainly wash his feet. Hercules then asked for the letter addressed by Allah's apostle, which was delivered by the Hayat to the governor of Busra, who forwarded it to Hercules to read. The contents of the letter were as follows: in the name of Allah, the beneficent, the merciful, from Muhammad, the slave of Allah and his apostle, to Hercules, the ruler of Byzance, peace be upon him, who followed the right path. So now Hercules is telling about the letter that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wrote to him, peace be upon him, who followed the right path. Furthermore, I invite you to Islam, and if you become a Muslim, you will be safe, and Allah will double your reward. And if you reject this invitation of Islam, you will be committing a sin by misguiding your peoples. O people of the scripture, come to a word common to you and us, that we worship none but Allah, and that we associate nothing in worship with him, and that none of us shall take others as Lord beside Allah. So this is all the letter that Allah's prophet has written to the king of Rome.
Then, if they turn away, say, bear witness that we are Muslims. Abu Sufyan then added, when Harqal had finished the speech and had read the letter, there was a great hue and cry in the royal court. So we were turned out of the court. I told my companion that the question of Ibn Abi Kabsha has become so prominent that even the king of Byzantine is afraid of him. Then I started to become sure that he would be the conqueror in the near future till I embraced Islam. So these are the all conditions. And then the sub-narrator adds that Ibn al-Natur was the governor of Ilya, Jerusalem, and Harqal was the head of Christians of Sham. Ibn Natur narrates that once while Harqal was visiting Ilya, he got up in the morning with a sad mood. Some of his peers asked him why he was in that mood. Harqal was a foreteller and a strong astrologer. He at night, when I looked at the star, I saw that the leader of those who practice circumcision had appeared. And now Harqal is telling about his dream. Who are they who practice circumcision? The people replied, except the Jews, nobody practice circumcision, so you should not be afraid of them. Just issue orders to kill every Jew present in the country. While they were discussing it, a messenger sent by the king of the Ghassan to convey the news of Allah, the pastor to Harqal, was brought in. Having heard the news, he ordered the people to go and see whether the messenger of Ghassan was circumcised or not. So this is a very lengthy hadith, and I'm trying to cover it in this video so that we can complete this chapter. The people, after seeing him, told Heraclius that he was circumcised. Harqal then asked him about the Arabs. The messenger replied, Arabs also practice circumcision. Harqal remarked that the sovereignty of Arabs had appeared. Harqal then wrote a letter to his friend in Rome, who was as good as Harqal. So as good as Harqal was a foreteller and astrologer, he was also a good astrologer, and stayed there until he received the reply of his letter from his friend, who agreed with him in his opinion about the emergence of the Prophet and the fact that he was a prophet. On that, Harqal invited all the heads of Byzantium to assemble in the palace of Homs, where they assembled. When they assembled, he ordered that all the doors of his palace to be closed. Then he came out and said, O Byzance, if success is your desire, and if you seek right guidance and want your empire to remain, then give a pledge of allegiance to the Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The people ran toward the gates of the palace like onagers, but found the doors closed. Harqal realized that their hatred toward Islam, and when he lost the hope of their embracing, he ordered that they should be brought back in the audience. He said, when what already said was just to test the strength of your conviction, and I have seen it. The people prostrating before him and became pleased with him, and this was the end of Harqal's story. So this was the end of all the story that started in this hadith, and after this hadith the first chapter revelation has complete, and in Urdu our हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है रेवलेशन का. कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी सवाब हासिल कर सकें. मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ बहुत जल्द.